Very good evening to all. This side Rupi Ahuja. एंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज गोल्ड मार्केट की फ्लक्चुएशंस के बारे में. तो डिस्कस करने से पहले एक बार जानना चाहेंगे कि आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है. इफ यस, काइंडली प्रेस 1 so that we can start our session from here. ओके, सो गोल्ड का मूव हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन डे कैंडल पे. और वन डे कैंडल पे आज की कैंडल हमारी एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, जिसमें कि ओपनिंग दिखाती हुई मिली 1735.24 पे. अभी तक का हाई 1745.32 और लो बनाते हुए 1733.11 एंड अभी जो मूव करते हुए दिख रही है 1738 के लेवल्स पे. लगातार गोल्ड में हम लोग को गिरावट देखने को मिली 1832 के रेजिस्टेंस से. वापस से एक बार हम लोग को बहुत ही अच्छा करेक्शन देखने को मिला और गोल्ड ने एक बार 1729 तक के लेवल्स को टच किया हुआ है कल के डे में. और फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी 1738 के लेवल्स पे है. डे वाइज डेटा देखते हैं तो 15 मिनट कैंडल के मूव को देखेंगे तो 15 मिनट कैंडल पूरी तरीके से 1735 के लेवल से 3738 के लेवल्स पे आती हुई दिख रही है. लास्ट कैंडल हम लोग को 39 तक के लेवल्स देते हुए दिखी और अभी 38 तक के लेवल्स पे मूव करते हुए. मार्केट को थोड़ा वॉच करेंगे, लेकिन हम लोग 7:30 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि 7:30 हमारा एक डेटा आने वाला है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी टाइम हम लोग एक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे. 1739 तक के प्राइसेस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं. पूरी तरीके से मार्केट में अपसाइड मूव. आज यूरोपियन सेशन में हम लोग को अपसाइड मूव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन होती हुई पूरी तरीके से हमारे अमेरिकन सेशन में, जो कि हमारा यूएस सेशन, और उसके बाद वापस से एशियन सेशन में एक अपसाइड रिबाउंड आते हुए 1738-39 तक के लेवल्स दिखाते हुए मार्केट दिख रही है. ऑल्दो आज का हाई बहुत ज़्यादा नहीं था, 1745 तक का ही हाई बनाया हुआ है और लो अपना 1733 के आसपास बनाया हुआ है आज का. अभी जो डेटा पब्लिश होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का मूव कैसा होगा, क्योंकि अभी का जो डेटा है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है. उसके मूव पे डिपेंड करेगा कि आगे का मूव कैसा होता हुआ दिखने वाला है. 1739 1740 की रेंज में प्राइसेस मूव करते हुए पूरी तरीके से. हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे और देखते हैं कि आज हम लोग को कौन सा डेटा देखने को मिलने वाला है. सो हम लोग ओपन करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर. एंड फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर में आज हम लोग देखेंगे कि 7:30 हम लोग को कौन सा डेटा देखने को मिलने वाला है और उसी बेसिस पे हम लोग अपने एक ट्रेड उठाएंगे आज. सो आज हमारी वेडनेसडे मार्केट 29 शाम को 7:30 जो डेटा देखने को मिलने वाला है, पेंडिंग होम सेल्स मंथ टू मंथ देख सकते हैं. एक्चुअल greater than forecast is good for currency. Measurement is the change in the number of homes under contract to be sold, but still awaiting the closing transaction, excluding new construction. Previous देख सकते हैं -1.8%,
एक्सपेक्टेशन 1.1% की, और देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हुए दिखते हैं। अगर 1.1% से ऊपर आते हुए दिखते हैं तो गोल्ड एक बार करेक्ट होता हुआ दिख सकता है और वाइस वर्सा अपसाइड आता हुआ दिख सकता है। इसीलिए हम लोग अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग 8 बजे एक और डेटा देखेंगे जो कि यूएसडी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि द मेजरमेंट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हेल्ड इन इन्वेंट्री बाय कमर्शियल फर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट वीक। प्रीवियस रिजल्ट -3.5 मिलियन, एक्सपेक्टेशन -2.5 मिलियन की है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट हमारे लिए अच्छा है। एंड एज यू नो, माइनस साइन पे जब जो हम लोग की चीज़ छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है, और जो चीज़ बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, राइट। तो -2.5 से अगर लेस डेटा आते हुए दिखता है तो हम लोग को एक बार वापस से करेंसी ऊपर और गोल्ड और डिप करता हुआ देखने को मिल सकता है, और वाइस वर्सा। तो जिस तरीके से मूव देखने को मिलेगा उस तरीके से हम लोग अपनी पोजीशन को कैरी करते हुए चलेंगे। फिलहाल हमारा जो इंतजार है अभी वो है पेंडिंग होम सेल्स मंथ टू मंथ पे। जैसे ही डेटा देखने को मिलेगा हम लोग तुरंत अपनी पोजीशन कैरी करेंगे। फिलहाल एक बार MT4 टर्मिनल पे मूव देख सकते हैं वापस से करेक्शन की ओर। 1737 1738 की रेंज में मार्केट मूव करती हुई। 1737.13 थोड़े से करेक्शन के साथ प्राइजेस आते हुए। 1737.3537। 4 मिनट बाद हमारी न्यूज़ और डेटा पब्लिकेशन का टाइम, हम लोग वेट कर रहे हैं उसके पब्लिश होने का, और तभी हम लोग अपनी एक पोजीशन कैरी करेंगे। फिलहाल नहीं करने वाले हम लोग। 7 साढ़े 7 बजे ही दूसरी पोजीशन कैरी करने वाले हैं। फिलहाल मार्केट का मूव देखेंगे 3 मिनट, और उसके बाद आएंगे अपने डेटा सेशन पे। $1738.21। 1737.55 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए हम लोग पूरी तरीके से वेट कर रहे हैं जो डेटा आने वाला है उसके लिए। जैसे ही डेटा आते हुए दिखेगा हम लोग अपनी पोजीशन कैरी करेंगे। सेवनटीन 37.4446 के लेवल्स। 2 मिनट बाद हमारा डेटा पब्लिश होने वाला है। हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इसको। रिफ्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि डेटा पब्लिश होते हुए जैसे हम लोग को दिखेगा ये डेटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग अपनी पोजीशन कैरी करने वाले 2 मिनट का वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा हम लोग को। ऑल्दो प्राइसेस अभी करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं 1739 के लेवल से 1737 की रेंज पे आते हुए फिलहाल। एक मिनट का टाइम है, हम लोग रिफ्रेश करते रहेंगे अपने डेटा को।
क्योंकि पूरी तरीके से वेट करें हम लोग इस न्यूज़ का, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, बट मीडियम इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, और उस मीडियम इम्पैक्ट से हम लोग 1-2 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो हम लोग को 1-2 पॉइंट्स में भी काफ़ी सही पोजीशंस कैरी करने को मिलेंगी और अच्छे प्रॉफिट्स होते हुए दिखेंगे। सेवन 29 के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, अभी डेटा पब्लिश होते हुए नहीं दिखा है। 7:30 पे हम लोग को करंट ये डेटा देखने को मिलेगा पेंडिंग होम सेल्स का। एक मिनट का वेट जस्ट, उसके बाद हम लोग ओके हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने डेटा को। ओके सो इट्स 8.1 एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, और हमारी करेंसी के लिए बहुत ही अच्छा होते हुए तो गोल्ड एक बार टिप कर सकता है। हम लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन शॉर्ट की बनाई हुई है यहाँ से, इस उम्मीद में कि प्राइसेस करेक्ट करते हुए दिखेंगे। आ जाते हैं अपने ट्रेड सेक्शन पे तो देख सकते हैं प्राइसेस पूरी तरीके से करेक्ट करते हुए हम लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया हुआ है 1737.1510 के लेवल्स पे। सेवनटीन 37.10 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हैं। हमारी पूरी उम्मीद है एक बार करेक्शन देखने को मिलेगा। प्राइसेस एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए 1737 पॉइंट ओके 1736.9792 के लेवल्स पे। उम्मीद करें अच्छे खासी करेक्शन की, जो कि प्राइसेस को करेक्ट करते हुए लेते जाए। 1 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल थोड़े से करेक्शन दिखाते हुए 1736.9395 और थोड़े से करेक्शन के साथ हम लोग की पोजीशन प्रॉफिट में, लेकिन अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का वेट करेंगे और अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए दिखेंगे। प्राइसेस करेक्ट करते हुए 1736.4348 के लेवल्स पे। हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का। मार्केट पूरी तरीके से डाउन 35.9192 के लेवल्स, $142 के प्रॉफिट के जनरेशन पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। 15 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं। 15 मिनट कैंडल पूरी तरीके से डाउन 1736.1214 के लेवल्स। प्राइजेस एक बार करेक्शन के साथ, जैसे कि हमारी उम्मीद थी, थोड़ी सी और करेक्शन होने देंगे और हम लोग अपनी पोजीशन प्रॉफिट्स में क्लियर करते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे जस्ट और अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे यहाँ से। ओके प्राइजेस डाउन आते हुए और हम लोग अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ओके सो हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन क्लियर की हुई है इस लेवल पे। 1737.05 पे 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1736.10 पे बाय किया वापस से। $190 के प्रॉफिट जनरेट होते हुए देखने को मिले हमें। आई होप आप लोगों ने भी न्यूज़ का फायदा उठाया होगा और पोजीशन क्लियर हो गई होगी। इफ यस काइंडली प्रेस 30 इन द चैट बॉक्स, ताकि हम लोग को पता चल सके कि आप लोगों ने भी सेम पॉइंट पे प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। न्यूज़ का इम्पैक्ट हम लोगों ने अच्छी तरीके से बेनिफिट उठाया पूरी तरीके से न्यूज़ की मूवमेंट का। आई होप यू ऑल्सो हैव
ट्रेडेड एज वेल एंड प्रॉफिट जनरेट किए होंगे, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से मूव किया और एक बार वापस से अपसाइड रिबाउंड करती हुई दिख रही है, हम लोगों ने बिल्कुल सही टाइम पे अपनी पोजीशन क्लियर की हुई है। फिलहाल 1736.3942 के लेवल्स पे बनाती हुई। जैसे कि मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि मार्केट में ये जो न्यूज़ है उतनी ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, मीडियम इम्पैक्ट है। तो 1-2 पॉइंट का वेरिएशन देगी, वहीं पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। एंड इस मार्केट में 1-2 पॉइंट के वेरिएशन से भी काफ़ी अच्छी पोजीशन हम लोग क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं एज वेल। वापस से एक बार मार्केट डाउन आती है 1735.5647 के लेवल्स पे। काफ़ी अच्छे करेक्शन के साथ 1734.8285। अभी बाइंग की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 34 के लेवल्स बना रही है, पॉसिबल है एक बार अपना आज का लो 33 ब्रेक करते हुए 30 तक के लेवल्स दे सकती है। 1734.1512 के लेवल्स पे मूव करते हुए थोड़ा सा मार्केट का मूव देखेंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन कैरी करना चाहेंगे तो फिर से करेंगे। अभी बाय साइड पोजीशन एकदम नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक चैनल बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हाई बनाया 1743, और दूसरी बार जब हाई बनाने गया इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो अपने लो को जरूर ब्रेक करेगी एक बार। ओके, तो जैसे मैंने कहा था 33 के लेवल को ब्रेक करेगी, 33 के लेवल्स पे आती हुई दिख रही है मार्केट, एक बार डाउन पूरी तरीके से 1732 तक के लेवल्स। सेवनटीन 33.5182 वापस से थोड़े से अपसाइड मूवमेंट के साथ देखने को मिल रही है। वन मिनट कैंडल मूव पे आ जाएंगे तो वन मिनट कैंडल अपसाइड रिबाउंड करती हुई 1734 के लेवल्स वापस से दिखाते हुए। फिफ्टीन मिनट कैंडल 1733 1734 की रेंज पे। थोड़े से अपसाइड रिबाउंड 1734.5957। थर्टीज के लेवल अभी तक दिखाते हुए नहीं मिली है मार्केट, हम लोग वेट कर रहे थे 30 के लेवल का, बट 33 के लेवल से 33-32 के लेवल से वापस एक बार अपसाइड रिबाउंड करती फिलहाल देखने को मिल रही है 1733.70। और अभी तक का लो जो इस कैंडल ने मार दिया अपना दिन भर का लो 1732.76 का लो मारा है अभी तक। और पूरी तरीके से उम्मीद करें एक बार 30 तक के टारगेट दिखाती हुई मिलेगी, क्योंकि 30 एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए, अगर वो मारती है तो हम लोग वहां से एक बार बाइंग बनाते हुए देख सकते हैं। 8 बजे से पहले एक बार 30 के लेवल पे अगर आ जाती है तो हम लोग वहां से बाइंग मोड पे आ सकते हैं। अभी बाय नहीं करेंगे, मार्केट को ऊपर जाना है तो जाने देंगे, अदरवाइज कहीं पे भी मूव करे नीचे आती है तो 30 पे हम लोग बाय करेंगे। इस लेवल पे बाइंग नहीं बन रही है, क्योंकि अपने लो को एक बार टच किया, उम्मीद कर सकते हैं उस लो को एक बार ब्रेक कर सकती है वापस से 1732.9291 के लेवल्स देख सकते हैं। बिग रेड कैंडल, हम लोग को उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी मार्केट, लेकिन इस न्यूज़ ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट किया हुआ है मार्केट को। मीडियम टर्म इम्पैक्ट था, लेकिन फिर भी मूव काफ़ी अच्छा दे गई, लगभग 4 से 5 पॉइंट का वेरिएशन दे दिया है, एंड इट्स रियली गुड। ऑल्दो हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके थे बीच में ही। द रीज़न में एंड कि मार्केट पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम लोग को ये टारगेट चाहिए वो टारगेट चाहिए, बिल्कुल नहीं। न्यूज़ टाइम पे जितने प्रॉफिट्स मिल जाए लेके साइड हो लेना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग जब टारगेट लेने बैठ जाते हैं तो मार्केट टारगेट हिट्स करने से पहले ही एक बार रिवर्स कर जाती है, तो वो सब सिनेरियोज न फील करें, इससे अच्छा है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते रहे, उससे लॉसेस के चक्कर कम होंगे, थोड़े से लॉसेस आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने आपके पास अकाउंट में फंड हो उससे छोटा ही ट्रेड लेंगे। ओके ग्रेट। तो जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था मार्केट अपना लो ब्रेक करती हुई दिखेगी, लो ब्रेक करती हुई दिख रही है 1732.82 7374। ओके,
1732 का अपना लो बनाया हुआ है, 1732.62 का, और अभी तक ब्रेक नहीं कर रही है। वेट करते हैं, जल्दी करेगी वो भी ब्रेक। 30 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। 30 से एक बार बाय उठाएंगे, बट अगर 8 बजे के लेवल्स के 8 बजे से पहले हम लोग को ऐसा लेवल नहीं दिखता है तो हम लोग 8 बजे के मूवमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि 8 बजे हम लोग का एक और डेटा आने वाला है। हम लोग 8:15 तक डेटाज को ही देखेंगे, सिर्फ न्यूज़ सेक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि डेटा हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। देख सकते हैं वापस से एक बार प्राइस का मूव देखें तो 32 के लेवल से 34 तक के लेवल्स पर आती हुई दिख रही है मार्केट। 1734.1920 के लेवल्स। इस कैंडल की क्लोजिंग 5 मिनट बाद, 5 मिनट तक इसका पूरा मूव देखेंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ साथ थोड़े से अपसाइड मूव देते हुए 33 नहीं 34 35 तक की क्लोजिंग दे सकती है ये, और हो सकता है डाउन क्लोज दे जाए। अगर डाउन क्लोजिंग दे जाती है तो वहां से एक बार दूसरी कैंडल भी हम लोग को डाउन होती हुई देखने को मिल सकती है। वापस से एक बार मार्केट करेक्ट करती है 1732.72 से। ओके, अपना लो ब्रेक कर दिया वापस से, जैसे कि हम लोगों ने कहा था मार्केट अपना लो ब्रेक करती हुई दिख रही है 1732.3841 के लेवल्स पे। 30 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है, 30 के लेवल से एक बार बाइंग बनेगी 31.8072, और 30 के लेवल बना गई, और हम लोग यहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाय मार्केट कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है 1730 के लेवल्स पे। $31.25 पे हम लोग की बाइंग है, और प्राइजेस 30.61 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल। थोड़े से अपसाइड रिबाउंड की हम लोग उम्मीद करें 32-33 तक के टारगेट्स की। सेवनटीन 31.2223 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए। ओके, वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए देख सकते हैं, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 30 के लेवल दिखाते के बाद वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड आते हुए दिखेगा, और हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का, फिर क्लियर कर लेंगे इस पोजीशन को भी। देख सकते हैं हम लोग एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे काम कर रहे हैं जिस लेवल को हम लोगों ने इंडिकेट किया था। अगेन हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में है। वेट करेंगे थोड़ा सा अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का, फिर ही अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सेवनटीन 1730.86, वापस से थोड़े से करेक्शन। दो मिनट बाद दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम है, वेट करेंगे 2 मिनट का और देखेंगे दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है। उम्मीद है कि अब एक बार अपसाइड मूव करती हुई दिखेगी मार्केट वापस से। 1730.8896 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए। वेट करें 2 मिनट का, 2 मिनट बाद हमारी दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम। बहुत ही बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन करती हुई दिख रही है हमारी ये कैंडल स्टिक। ओके, 30 के भी लेवल्स को ब्रेक करती है, 29 तक के लेवल्स दिखाती हुई मिल रही है।
1729 के लेवल्स को टच करती हुई वापस से एक बार अपसाइड। ग्रेट। अभी तक अपना लो बनाया 1729.65। वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करती हुई, अपसाइड रिबाउंड करेगी तो हमारी पोजीशन ऑलरेडी कैरीड है और प्रॉफिट से जनरेट होते हुए दिखेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है एक बार अपसाइड रिबाउंड करती हुई नेक्स्ट कैंडल में दिखेगी थोड़ी सी, अगर क्लोजिंग अच्छी देती है तो। ऑल्दो हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में है, बट वी आर ट्राइंग टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस मार्केट, not the least profit, but we are expecting some good profits from the market. That's why we are waiting for some time. कभी कभी मार्केट को मूव करने देना चाहिए, ये लेके नहीं बैठना चाहिए कि इसी पे मूव क्लियर करेंगे, इसी पे क्लियर करेंगे, बिल्कुल नहीं। आराम से रिलैक्स करिए, गो टू योर बेड, टेक रिलैक्स एंड देन मार्केट का मूव देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। ओपनिंग एक शॉर्ट रेड कैंडल है तो उम्मीद कर सकते हैं अपसाइड जाएगी अभी थोड़ी सी। शॉर्ट रेड कैंडल के साथ फिलहाल हम लोग को डराते हुए मार्केट 1730.7987 के लेवल्स पे मूव करती हुई जो दिख रही है। उम्मीद है बाइंग प्रेशर आएगा। 30 हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1 मिनट कैंडल थोड़ी सी डाउन, लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं रिकवरी की। सेवनटीन 30.5049 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल मार्केट वेट करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो ये 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है वो इनिशियली हम लोग को एक दो रेड कैंडल दिखा के डराती जरूर है। मार्केट मार्केट कभी भी बिना डराए प्रॉफिट जनरेट करने नहीं देगी हमें। देख सकते हैं एक कैंडल डाउन और दूसरी कैंडल हम लोग की अप होती हुई दिख रही है, स्लाइड अप। डरा डरा के प्रॉफिट देगी, लेकिन प्रॉफिट देगी जरूर। सो विल वेट फॉर सम टाइम। प्रॉफिट तो निकालेंगे हम लोग मार्केट से। देख सकते हैं 1730.65 और वापस से करेक्शन। बहुत सही मूव दे रही है इस टाइम पे मार्केट। 15 मिनट कैंडल का देखेंगे मूव तो 29 तक के लेवल से अगर अभी डाउन जाती है तो 27 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ओके, वापस से करेक्शन और 30 के लेवल को जिस तरीके से मेंटेन कर रही है, देखते हैं 30 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कि नहीं। मोरओवर हम लोग इस सेशन में आज पूरी तरीके से मार्केट का मूवी देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूज एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 8 बजे हमारा एक और डेटा है एंड वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट डेटा, बिकॉज कल भी हम लोगों ने एक मिस कर दिया था जिसकी वजह से हम लोग वो डेटा देखना भूल गए थे। एंड नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग वापस से वही गलती करें। आई मेक श्योर कि कोई भी डेटा हम लोग मिस ना करें, सारे डेटाज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करते हुए दिखें। 1731 पे हम लोग की बाइंग है। इट्स नॉट द लीस्ट बिग पॉइंट जहां से हम लोग की बाइंग है, क्योंकि 2 पॉइंट नीचे मार्केट अभी मूव करती हुई दिख रही है। पूरी तरीके से 2 पॉइंट भी नहीं है। 1729.81 के लेवल्स पे कोई इशू नहीं है। 2 मिनट में अभी रिबाउंड करती हुई दिख सकती है, जिस तरीके से 30 का लेवल मेंटेन कर रही है। प्रोबेबली एक बार वापस से अपसाइड मूव करती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी 15 मिनट की कैंडल को ओपन हुए 2 ही मिनट हुए हैं। 2 मिनट में डराया है अभी मार्केट ने हमें। देखते हैं 2 मिनट बाद अब कैसा मूव देती है। मार्केट पहले डाउन डाउन दिखा के लोगों को बाहर निकालती है और उसके बाद एक बार अपसाइड मूव करती है जब लोग डर के बाहर निकल जाते हैं। यूजुअली ये होते हुए दिखा है। 1729.4250। ओके, वापस से आज का लो बनाते हुए आज अगर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, आज अगर मार्केट हमारी 25 और 30 के बीच में अगर क्लोज देती है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जल्दी हम लोग को 1680 के टारगेट देखने को मिलने वाले हैं गाइस। और 1680 के टारगेट हम लोग बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि भी हम लोग को देखने को नहीं मिले। और इस बार अगर 1680 बनाया मार्केट ने तो वो 1620 और 1580 तक के भी टारगेट्स बनाती हुई दिख सकती है, एंड मोर ओवर 1500 तक के भी।
पूरी तरीके से करेक्ट होती हुई मार्केट 1728 के लेवल्स को टच कर लिया है, 1727. A big correction in the market from 1736-37 to 1727, 10 पॉइंट्स का करेक्शन. अगर इस बार मार्केट की न्यूज नेगेटिव आ गई तो फिर तो सोने पे सुहागा, हम लोग को 1700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं. एंड अदरवाइज वापस से एक बार रिबाउंड होते हुए दिखेगा, लेकिन पूरी उम्मीद है एक बार रिबाउंड करने की. इतने ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद हम लोग को अभी है नहीं, अभी आज के दिन में तो नहीं है. मोरोवर आगे तो होना ही है, लेकिन आज के दिन में इतनी उम्मीद नहीं कर रहे कि इतना ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा. 749, 10 मिनट बचा है हम लोग का दूसरी डेटा पब्लिश होने में. 1727, 1728 की रेंज मार्केट बनाए हुए हैं. ओके ग्रेट. 1726 तक के डेटास प्राइजेस पूरी तरीके से करेक्शन के साथ. हम लोग एक बार स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को हटाएंगे और हम लोग देखेंगे प्राइस के मूव को बहुत अच्छे से. ग्रेट. प्राइजेस पूरी तरीके से करेक्शन के साथ 1726.0507 की रेट्स देते हुए एक अच्छे खासे करेक्शन के साथ 1 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे. पूरी तरीके से डाउन होती हुई 1726.5467 के लेवल्स. वनडे कैंडल पे आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको रिबाउंड करेंगे हम लोग. ओके वापस से थोड़े से अपसाइड मूव देती हुई 1727 के लेवल्स पे 1 मिनट कैंडल थोड़े से अपसाइड मूव. लेकिन हम लोग 8 बजे के डेटा को देखेंगे पहले कि उसका मूव किस डायरेक्शन में होता है. अगर वो एक बार अपसाइड के डेटा दिखाती है तो हम लोग को 32 तक के टारगेट्स वापस से मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं. 1726.94, 1727. ओके सो जब तक मूव देखने को मिलता है हम लोग एक बार डेटा एनालाइज करते हैं. तो 7:30 का डेटा हम लोगों ने देख लिया और प्राइजेस पूरी तरीके से करेक्ट होते हुए दिखे. सेम हमारे पास एक न्यूज़ आने वाली है 8 बजे के लगभग. एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग इस डेटा को. ओके सो जो डेटा आज पब्लिश होने वाला है हमारा वो ये रहा. क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज 8 बजे डेटा आने वाला है. Source is the Energy Information Administration. Measurement change in the number of barrels of crude oil held in the inventory by commercial firm during the past week. Previous results minus 3.5 million. Expectation minus 2.5 million की. Actual less than forecast is good for currency. यानी कि actual data अगर less than forecast आता है तो हमारी करेंसी के लिए अच्छा होते हुए, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए अभी गोल्ड को ऊपर करना है थोड़ा सा, तो हम लोग की करेंसी के लिए स्ट्रांग नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट का डेटा आना चाहिए, यानी कि -2.5 मिलियन से ज़्यादा का डेटा आना चाहिए. राइट. हमारी एक्सपेक्टेशन ये है ताकि गोल्ड एक बार वापस से अपसाइड रिबाउंड करते हुए दिखे और दोनों ही न्यूज़ मार्केट को एक बार बैलेंस पे लाते हुए दिखे. 1725 कल के लो को भी ब्रेक कर दिया. एक बार वनडे कैंडल का मूव देखेंगे तो देख सकते हैं पूरी तरीके से डाउन आती हुई मार्केट. ग्रेट. और जिस तरीके से 1725 तक के लेवल्स दिखाती हुई मिल रही है पूरी तरीके से क्लियर है. 1700 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे. पिछली बार एक ही बार में देखने को मिल गए थे, इस बार थोड़ा सा रुक रुक के देखने को मिल रहा है.
डिफरेंस बस इतना सही है। और इस बार जो करेक्शन आती हुई दिखेगी वो ज़्यादा आती हुई दिखेगी, क्योंकि यूएस की बात कर ले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है जिस तरीके से दिख रही है। ऑल्दो 2024 में बढ़ने की उम्मीद है इंटरेस्ट रेट, बट अनाउंसमेंट जो अभी से ही चल रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की इसकी वजह से गोल्ड एक बार वापस से डिप करते हुए दिख सकता है। और उसके साथ ही टेपरिंग के भी न्यूज़ आ रही है। इकोनॉमी पूरी तरह से ग्रो करती हुई दिख रही है, उसकी वजह से गोल्ड हमारा सेफ हेवन एसेट एक बार करेक्शन की ओर बनता ही है। 1726.7371 के लेवल्स। लगातार दो बिग रेड कैंडल के साथ मूवमेंट दिखाती हुई पूरी तरीके से करेक्शन। 6 मिनट का वेट करेंगे, एक्चुअली 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट बाद हमारा एक और डेटा पब्लिश होने वाला है और उसका मूव देखेंगे किस तरीके से देखने को मिलता है। मार्केट थोड़ी सी रिकवर करती हुई दिख रही है 1727 के लेवल्स पे। एक बार वापस से रिबाउंड 1728 तक के लेवल्स, मार्केट एक बार पहले ही अपसाइड आती हुई दिख रही है बिना न्यूज़ के ही। देखेंगे न्यूज़ का इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में पड़ता है और मार्केट एक बार वापस से कहाँ रिबाउंड करती हुई दिखती है। 1728.0203 के लेवल्स। सॉरी। हमारी पूरी उम्मीद है मार्केट से कि एक बार जो डेटा आते हुए दिखे वो अपसाइड मूव करते हुए दिखे। मार्केट अब थोड़ी सी रेंज बाउंड होती हुई दिख रही है 25 टू 28 के लेवल्स में फिलहाल मूव करती हुई। तीन मिनट बाद हमारी न्यूज़ पब्लिश होने वाली है और प्राइसेस ऑलरेडी 1729 के लेवल्स पे आते हुए। अगर 30 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो हम लोग को वापस से 32 33 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग के पास 2 मिनट का टाइम है और हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे। इस टाइम हमारी न्यूज़ पब्लिश होने वाली है तो हम लोग ओके सो देख सकते हैं रिफ्रेश मार्क हमारे पास आ चुका है। एक्चुअल लेस देन एक्सपेक्टेशन हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा और गोल्ड के लिए डिप्स करता हुआ दिखेगा। 2 मिनट का टाइम है, हम लोग इस न्यूज़ को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और देखेंगे मार्केट का मूव किस डायरेक्शन में है। हमारी पोजीशन ऑलरेडी कैरीड है। अगर डिफरेंट साइड में मूव दिखता है तो हम लोग एक शॉर्टिंग भी करके चलेंगे। इससे क्या होगा, पोजीशन हेज भी हो जाएगी और अगर हम लोग ज़्यादा लॉट लेके चलते हैं तो प्रॉफिट्स भी जनरेट होते हुए दिखेंगे।
मार्केट में ये नहीं कि लॉसेस नहीं होते हैं, बट उस लॉस को रिड्यूस कैसे करना है और लॉस से बच के उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिकली दिस वन थिंग ट्रेडर्स डू, एंड हम लोग वही करेंगे। वेट करेंगे 1 मिनट का, और अपने न्यूज़ को एनालाइज करते हुए दिखेंगे। जस्ट 1 मिनट है हमारे न्यूज़ को पब्लिश होने में। 7:59, 1 मिनट का। ओके, इट्स 8 नाउ। और हम लोग रिफ्रेश करें इस डेटा को। रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि मूव किस डायरेक्शन में है। अभी तक डेटा पब्लिश होते हुए नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश करते रहेंगे जब तक कि पब्लिश करते हुए नहीं दिखता है। ओके, सो इट्स 4.6 मिलियन और हमारी एक्सपेक्टेशन थी -2.5 की। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग देखने को मिल रहा है, राइट? तो हम लोग का गोल्ड जो है एक बार टिप्स करते हुए दिख सकता है 1728.62, लेकिन इस लेवल पे हम लोग को शॉर्ट करने का मन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम लोग को बाय करने को आता तो हम लोग करते। शॉर्ट करने की अभी पोजीशन बन नहीं रही है हमारी। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग शॉर्ट करें, हम लोग मार्केट का मूव देखेंगे। सेवनटीन ट्वेंटी 7.6348 करेक्शन दिखाते हुए मार्केट एक बार डिप्स करती हुई दिख रही है। देखते हैं कितनी डाउन जाती हुई दिखती है आज हम लोग को। 1727.1012 करेक्शन दिखाते हुए। इस न्यूज़ का उतना इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए दिखेगा कि नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखता नहीं है। इसीलिए हम लोग इस पर कोई मूव ले नहीं रहे हैं फिलहाल। बस मार्केट का मूव देख रहे हैं कि डायरेक्शन हम लोग को डाउन की देखने को मिल रही है। एक सेकेंड। इट्स एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, राइट? एंड एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट वर्ड्स। ओके, ग्रेट। तो हमारी जो पोजीशन है हम लोगों ने गलत एनालाइज कर लिया, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। देखिए, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आ रहा है, तो हमारी करेंसी के लिए स्ट्रांग होते हुए, ओके, करेंसी के लिए वीक होते हुए और गोल्ड के लिए अपसाइड मूव दिखाते हुए। लेकिन फिलहाल गोल्ड हमारी न्यूज़ के बियॉन्ड काम करते हुए एक बार वापस से डाउन होते हुए दिख रहा है। न्यूज़ हमारी पॉजिटिव आती हुई गोल्ड के लिए, लेकिन फिलहाल वापस से करेक्शन थोड़ी सी। सेवनटीन ट्वेंटी 7.8023। बहुत ही तेजी के साथ करेक्शन हो रहा है, जबकि गोल्ड में इस टाइम तेजी होनी चाहिए, और वापस से करेक्शन दिखाती हुई मिल रही है।
1726.8785 पूरी तरीके से मार्केट एक बार करेक्ट करती हुई, जबकि न्यूज़ हमारी अप की है और प्राइजेस हम लोग को वापस करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सेवनटीन 26.9396, 1727.0104, थोड़े से अपसाइड मूव, थोड़ी सी करेक्शन, मार्केट मूव करती हुई फिलहाल वापस से डाउन। कह नहीं सकते आज इसका मूव कितना नीचे जाएगा। सेवनटीन 26.4947, हम लोग पूरी उम्मीद करें एक बार अपसाइड राइज की। थोड़े से अपसाइड मूव, 1727.1912, उम्मीद करें 1728 तक के लेवल्स हम लोग को जल्दी देखने को मिले। सेवनटीन 27.4644, थोड़े से अपसाइड मूव और हम लोग को 1728 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर अच्छे खासे मूव आते हैं तो 30 तक के लेवल्स भी मार्केट बनाती जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज हमारा पूरा ध्यान मूवमेंट पे ही है मार्केट के, क्योंकि मार्केट का मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इतने डिप्स पे है कि बाय भी नहीं बन रही है और इतने डाउन साइड प्राइस है कि हम लोग को सेल करने में भी हिम्मत नहीं है। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है या तो बहुत ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर, तो पेशेंस की ज़रूरत होती है एंड इमोशनल सेंटिमेंट्स को खत्म करने की जरूरत होती है। देख सकते हैं वापस से एक बार करेक्ट करती हुई दिख रही है 26 के लेवल्स पे। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 25 का लेवल एक बार ब्रेक करती है तो 1718 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्टेड है अभी तक के लिए आज के दिन में। सो सोच समझ के ही ट्रेड लेंगे। सेवनटीन 26.8285 के लेवल्स। मार्केट अब स्टेबल होती हुई दिख रही है 27-28 के लेवल्स पे। देख सकते हैं लगातार 3 1 मिनट कैंडल एक ही प्राइस पे स्टेबल होती हुई यहाँ पे, और स्टेबिलिटी के साथ जहाँ तक हम लोग को लग रहा है एक बार अपसाइड साइज करती हुई दिखे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुका है। 1727 के लेवल
कल हम लोग को 1737 के आसपास, नहीं 1729 के पास लो बनाती हुई दिखी थी आई गेस। एक बार देख लेते हैं कल का मूव। तो कल हम लोग की मार्केट यहाँ पे थी, जस्ट सेकंड, हाँ। तो कल हम लोग का लो जो बनाया हुआ था 1727.96 एंड आज का लो जो देखने को मिल रहा है 1725.70। डेली अपने लो को क्रॉस क्रॉस करती हुई जिस तरीके से जा रही है, और मोमेंटम जिस तरीके से जो चैनल बना हुआ है हम लोग का, अपने हाइस को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। इसने भी अपने हाइस को ब्रेक नहीं किया, और इसने भी स्टिल अपने हाइस को ब्रेक नहीं किया। हाइज इन द सेंस प्रीवियस हाई, इसका प्रीवियस हाई दिस लेवल, इसका प्रीवियस हाई दिस लेवल, इसका प्रीवियस हाई दिस लेवल, राइट। तो जब एक बार अपसाइड गई, अगर इस लेवल को ब्रेक कर ले जाती तो हम लोग अपसाइड उम्मीद करते। अगर ये वाली कैंडल हम लोग के इस लेवल को ब्रेक कर जाती, ये वाले लेवल को, सर्टेन लेवल को, तो हम लोग कहते एक बार ब्रेकआउट आएगा। अगर यही कैंडल हम लोग के इस लेवल को ब्रेक कर जाती, तो भी हम लोग कहते कि एक ब्रेकआउट आएगा। बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये चैनल पूरी तरीके से डाउन आते हुए जा रहा है। प्राइजेस में करेक्शन तो है, बहुत अच्छी करेक्शन है भाई। तो हम लोग उस करेक्शन से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अभी थोड़ी देर में हम लोग को 1728 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और 28 तक की मार्केट आती हुई दिख रही है। बट टिप्स पे बाय करने की उम्मीद अभी भी नहीं है मेरी, क्योंकि कह नहीं सकते अभी का मूव, मार्केट एक बार डाउन वापस से डाउनफॉल दिखाती हुई मिल सकती है। 1728.7, 1728.6 पूरी तरीके से अपसाइड मूव मार्केट में। स्टिल अगर तेजी देखने को मिलती है तो 30 to 35 तक की रेंज में आज हम लोग क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ऊपर हम लोग क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोग को लो होती हुई दिखेगी। और पूरी उम्मीद है कि कल की मार्केट एक बार डाउन आती हुई दिख सकती है हमें वापस से, इंस्टेड कि कोई ऐसा डेटा ना आता हुआ दिखे जो कि प्राइजेस को पूरी तरीके से राइज करता हुआ दिखे। हम लोग को प्राइजेस एक बार 1700 को ब्रेक करते हुए दिख सकते हैं। 4 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है। हमारा पूरा ध्यान मार्केट की ओर ही है, जस्ट बिकॉज कि इस टाइम मार्केट बहुत अच्छी मूव करती है, तो हम लोग पूरा ध्यान मार्केट की ओर दे रहे हैं। 1728.3132 के लेवल्स। वापस से थोड़ी सी करेक्शन, 2 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम। एक बार हम लोग अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे आते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा में हम लोगों ने अपने दोनों दोनों डेटा देख लिया, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 9:15 से हम लोग को फेड चेयर पावर स्पीक देखने को मिलने वाली है। और 9:15 से हम लोग इस स्पीक को भी डिस्कस करेंगे, और इस स्पीक में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। So description due to participate in virtual panel discussion titled Policy Panel at ECB Forum on Central Banking. Sources Federal Reserve and Speaker Federal Reserve Jerome Powell. तो हम लोग इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर मोर हॉकिश रिजल्ट्स आते हैं
मोर हॉकिश मतलब ये होता है कि जब हम लोग की इकोनॉमी स्ट्रांग होती हुई दिखती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखता है, हम लोग की इकोनॉमी में सुधार आता हुआ दिखता है, तो हम लोग को मोर हॉकिश के रिजल्ट्स देते हैं। और मोर हॉकिश हम लोग के गोल्ड के लिए पूरी तरीके से डाउन होते हुए दिखता है। तो इसको हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि इसके इस दौरान हम लोग को प्राइसेस में मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। सो 9:15 से हम लोग इस मीटिंग को देखेंगे। 11:30 हम लोग को एक और स्पीक देखने को मिलने वाली है, जो कि एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग ये कैसे बोल रहे हैं, तो मैंने आप लोग को बहुत बार बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देते हैं। जिस डेटा पे हम लोग को रेड साइन देखने को मिलते हैं, दैट इज द हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि इस डेटा के रिजल्ट हम लोग को हाई इम्पैक्ट वाले दिखेंगे। येलो वाले लो इम्पैक्ट, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कल के लिए बात कर ले, तो कल हम लोग के पास 6 बजे डेटा, फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर टू क्वार्टर, ये दोनों डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट श्योर कि जो भी शाम को 6 बजे डेटा, शाम को 6 बजे सेशन लेता है, वो आपको पूरी तरीके से इस डेटा को एनालाइज करना और उसमें ट्रेड कैसी लेनी है वो भी बताते हुए दिखेंगे। और जब हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी, हमारा सेशन, उस टाइम पे हम लोग को शिकागो पीएमआई डेटा देखने को मिलेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू। इसके साथ ही 7:30 एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8:30 से हम लोग को एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक देखने को मिलेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू। एंड 10 बजे हम लोग को एफओएमसी मेंबर इवान स्पीक, यानी कि कल हम लोग के पास स्पीक्स बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से गोल्ड में मूव भी बहुत देखने को मिलेगा। और साथ ही डेटा भी काफ़ी अच्छे है, जिसकी वजह से मूवमेंट काफ़ी अच्छी आ सकती है मार्केट में। फ्राइडे की बात करते हैं। सो फ्राइडे की बात अगर हम लोग कर ले, तो फ्राइडे में हम लोग के पास, ओके, सो शाम को 6 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ टू मंथ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा। अगर ये हम लोग को फ्राइडे की मार्केट का डेटा लो आते हुए दिखता है गोल्ड के लिए, तो हम लोग 1600 की उम्मीद तुरंत कर सकते हैं सिर्फ फ्राइडे के दिन में। लेकिन अगर हाई आता है तो 1760 तक के टारगेट्स हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ पर्सनल इनकम मंथ टू मंथ और पर्सनल स्पेंडिंग मंथ टू मंथ, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग का 6 बजे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ टू मंथ का ही पड़ते हुए दिखेगा। इसके बाद 7:30 तो 6 बजे तो आप लोग के साथ जो भी सेशन रहता है, आएगा इस मोंटी सर का सेशन होता है, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस न्यूज़ में रिएक्ट करना है। 7:30 हमारा टाइम है। 7:15 भी डेटा है, 7:15 फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, अपनी ट्रेड नहीं फंसाएंगे। हम लोग अपनी ट्रेड बचा के रखेंगे इसके लिए, जो कि 7:30 डेटा आने वाला आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। लास्ट टाइम जब आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था, उसी दिन गोल्ड हमारा 1803 से 1757 तक के लेवल्स दिखाया था। और इस बार हमारा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है, तो हम लोग को इसको पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि जिस तरीके से इम्पैक्ट दिखा है, हम लोग सेम डायरेक्शन में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करते हुए दिखे। साथ ही यूएसटी का रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग मंथ टू मंथ, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस रिवाइज्ड, यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट्स टोटल व्हीकल सेल्स। तो इन सबको हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यानी कि फ्राइडे का हम लोग वेट करेंगे, कि बहुत ही अच्छा डेटा है एंड एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करें हम लोग उस टाइम। आ जाते हैं MT4 पे, तो ओके, मार्केट स्टिल डाउन, एक दूसरी कैंडल फॉर्म की और वो भी 1726.75 के लेवल्स पे करेक्शन के साथ। सेवनटीन 26.5755 के लेवल्स पे मूव करते हुए प्राइजेस। सेवनटीन 26 के लेवल्स को पूरी तरीके से मार्केट स्टेबल की हुई है। अगर इसको स्टेबल कर लेती है तो ओके, अदरवाइज हम लोग को वापस से एक बार करेक्शन देखने को मिलेंगे और 17
18, 17, 17 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, अगर यहाँ से रिकवर करती हुई नहीं दिखती है तो। फिलहाल उम्मीद है एक बार रिकवरी करती हुई दिख सकती है। सेवनटीन 26.3742 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए हम लोग अपने दूसरे सेशन में पूरी तरीके से न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है हमारा 7 से 8:30 का टाइम, वो मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और मोमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग आएंगे, अपने न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले मोमेंट्स को देखेंगे, कुछ डिस्कशन पॉइंट्स देखेंगे। हम लोग अपने दूसरे सेशन में पूरी तरीके से न्यूज़ 5 मिनट कैंडल का मूव एक बार देख ले तो 5 मिनट कैंडल लगातार डाउन आती हुई, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्टेबल होती हुई दिख रही है। एक बार अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, जो कि हमारा ये लेवल है अराउंड 1729.30, 1729.30 को अगर ब्रेक करती है तो ही अपसाइड रिबाउंड करेगी, अदरवाइज वापस से एक बार अगर 1725 के नीचे जाती है तो टूट सकती है, वापस से हम लोग को देखने को मिलेगी। सेवनटीन 26.1314 के लेवल्स पे प्राइजेस करेक्शन के साथ, और वापस से 1725 का लेवल बनते हुए मार्केट के पास इतनी जगह ही नहीं है नीचे जाने की जितनी नीचे जाती हुई जा रही है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो जगह बन जाएगी जब उसको नीचे जाना होगा। अगर हम लोग बोलिंगर बैंड से ही मूव देखें ना, तो बोलिंगर बैंड पूरी तरीके से स्प्रेड होते हुए दिख रहा है अपसाइड और डाउन साइड, जिसका मतलब यही है कि एक बार डाउन साइड इम्प्लीकेशंस वापस से देखने को मिल रहे हैं। 1726.70 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए 1725.99 के लेवल्स जिस तरीके से बार बार ट्रेस कर रही है मार्केट, पॉसिबल है एक बार 1720 तक के लेवल्स दिखाते हुए मिले। 1725.74 मार्केट स्टिल डाउन, पूरी तरीके से करेक्शन की ओर। जिस तरीके से आज मार्केट करेक्ट होती हुई दिखी है, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिले हैं। 45 पे हाई बनाते हुए और 25 का लो बनाते हुए, यानी कि 20 पॉइंट्स डाउन आती हुई पूरी तरीके से।
देख सकते हैं जिस तरीके से 25 के लेवल्स को बार बार टच कर रही है, एक बार 25 के लेवल को तोड़ती हुई भी दिख सकती है। 25 26 के लेवल्स पे। पूरी तरीके से स्टेबिलिटी, प्राइसेस उसी लेवल्स के बीच में 25 टू 27 के लेवल्स में। और वापस से एक बार मार्केट रिबाउंड करती हुई 1727.85 1728 के लेवल्स पे आ चुकी है, लेकिन जब तक 1729.30 का लेवल ब्रेक नहीं करती है हम लोग तेजी की उम्मीद नहीं करेंगे। 1729.20 हमारे ट्रेंड को एक बार ब्रेक करने के लिए एक बहुत अच्छा लेवल है। ये वाली जो लाइन है 1729.50, इसको ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसेस एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए दिखेंगे। पूरी तरीके से अपसाइड स्पाइक करती हुई 1728.3532 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए अपसाइड एक बार आते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से वापस से 27 के लेवल्स को टच कर रही है, जब तक 29 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी हम लोग कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं देंगे यहाँ से, जब तक हम लोग को 29.50 का लेवल ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि मार्केट ये जो तेजी दिखा रही है ये हो सकता है कि एक बार थोड़ी सी तेजी दिखाने के बाद वापस से वही करेक्शन दिखाती हुई मिले। देख सकते हैं दो लगातार बुल ग्रीन कैंडल के बाद वापस से एक शॉर्ट रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, 1 मिनट कैंडल। 29.50 का लेवल ब्रेक होते हुए दिखेगा तभी हम लोग को उम्मीद करनी है अपसाइड मूवमेंट की, अदरवाइज तब तक नहीं करनी है। अभी फिलहाल 28.0509 के लेवल्स पे मूव करते हुए अच्छी अपसाइड रिबाउंड दिखाती हुई 1728.1930 के लेवल्स। सो हम लोग अभी का सेशन यहीं पे एंड करने वाले हैं। अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो लाइव चैट आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग
मेंशन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इस सेशन में पूरी तरीके से प्राइजेस का मूवमेंट देखा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10 मिनट बाद जब डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से अपने न्यूज़ और डेटा को एनालाइज करेंगे। उसके पहले अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और एल्स टाइप 100 टू एंड दिस सेशन राइट है। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर है। हम लोग 10 मिनट बाद वापस से मिलेंगे और देखेंगे एक बार कि ये जो लेवल है 1729.50 वो ब्रेक होते हुए दिखा कि नहीं, और उसके बाद अपने न्यूज़ सेक्शन और डेटा एनालिसिस को देखेंगे कि कैसे कैसे डेटाज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वापस से सेम सेशन ज्वाइन करिएगा 8:40 पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वापस से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम 10 मिनट बाद।
Tired of cold calling? Introducing Lucia, the easiest, most accurate way to prospect. Discoveries had begun, but only haltingly. And you all concurred that the global economy was facing a sea of uncertainty. However, monetary and fiscal authorities had already started delivering their forceful and undeniably successful coordination that began sowing the seeds of the economic recovery that we are seeing and have been seeing over the past few months. So here we are a year later. Vaccines have been rolled out in big parts of the world, of course, not in all parts of the world. Huge stimulus packages have achieved their objective. Countries have opened up again. And of course, there is a global economic recovery. So I thought that the first question I had for all of you is just to assess where we are today. Are the dark days of the pandemic really over? And can I get your assessment of the global economy over the next, let's say, 6 to 9 months? I'd like to begin there to set the stage for the rest of our conversation. And I think I'll go with the sun. So I will begin with Governor Kuroda, then I will go to President Lagarde, then Governor Bailey, and then Chair Powell. So Governor Kuroda, over to you. Thank you. Thank you very much. The Japanese economy, of course, suffered a major contract by almost 10% from the previous year in the second quarter of last year. But since then, the economy has been gradually recovering or picking up. Now, two factors. One, the exports have been growing quite firmly on the back of expanding global digital-related demand. And second, the industrial production also recovered quite significantly. Now it's well over the level prevailed before the pandemic. On the other hand, consumption is still very weak. So this is the situation the Japanese economy still faced with, particularly the pandemic. But we think the economy will continue to recover and could reach the level prevailed before the pandemic at the end of this year or early next year. At this moment, the GDP is 2.7 percentage point below the level prevailed before the pandemic, but it is
so close to the level. And we expect the GDP will reach the level prevailed before the pandemic, as I said, toward the end of this year or early next year. Two factors. One, the Japan's fully vaccinated rate has risen to nearly 60%, which is a level comparable to that in the United States and in Europe. You may know that the government decided to finish or the end the so-called emergency state declaration. So all in all, I think the consumption, which has been quite weak, would gradually step up. On the other hand, corporate sector enjoys fairly firm profit situation, which is translated into, again, fairly firm pickup in business fixed investment. So, as I said, the weak point is still consumption, but that is likely to recover in the coming months. So, although on the whole, this fiscal year GDP growth may be quite small, but next year the economy is likely to grow about 4% or something like that. So that is the situation the Japanese economy is faced now. Great. Thank you. Thank you. Thank you, Governor Kuroda. Can I just turn to you, President Lagarde, now to give us your overall assessment of where we're heading for the next, let's say, 6 to 9 months? Sure. And then good morning, afternoon, evening to my three colleagues. I'm delighted that you could join, and I hope that next year it's in Sintra that we'll get together. I said yesterday that we're back from the brink, but not completely out of the woods. And that is certainly the good translation of what we have seen, which was a very unusual recession followed by a very unusual recovery. And we are in that process of recovery. It's a very unusual recovery because it is the steepest recovery we have seen in the euro area since 1975. By the end of 21, the euro area will be back to pre-pandemic level and will move back to the trend that it was on before the pandemic hit us. So this recovery is very unusual, very rapid, and I would say that it has been largely attributable to the rapid vaccination campaign eventually, because now over 70% of the population over the age of 12 is fully vaccinated. It is attributable to the removal of the containment and the lockdown measures that have been virtually removed in all euro area, except for some social distance protection, such as the wearing of masks. But it has not stopped or reduced the activity both in manufacturing and in services, which have picked up significantly. And we have seen some interesting reaction on the part of those who suddenly were sort of relieved and released, in the sense that we have seen a pickup of purchases of goods in particular, which was very unusual. And of course, the services now has been seriously accelerating, and we're using all sorts of unusual instruments to try to measure that. Mobility measurements in particular are clearly showing that people are going back to consuming services, and sometimes more than they had before pandemic. But contrary to last year, where we said that there was a sea of uncertainty, the sea has receded somehow, but we still have uncertainty. And those uncertainty operate as a threat to the growth that we are seeing at the moment in that really unusual recovery. I would mention two of them. The first one is the supply bottlenecks and the disruption of supply chains, which we have been experiencing now for a few months, and which seems to be
continuing and in some sectors accelerating. I'm thinking here about shipping, cargo handling and things like that. And clearly, if we look at some of the exporting countries in the euro area, they would have been able to export much more goods than they have because of these issues. How long those bottlenecks will take to be resolved and to fade out remains to be seen, and I think it's one of the question marks that we have on our radar screen. The second point that I would like to mention, because the euro area is a net importer of energy, is the significant increase in the price of energy pretty much across the board, led obviously by gas, by electricity, by oil to a certain degree as well. But, those are sort of base effects of what we saw last year, which was a major decline of those prices. And we'll see how long it takes for that to fade away. It should go out in the first part of 22, but those are two uncertainties. And I would mention the last of the uncertainties that we have to account for as well, and that is potential new waves of a pandemic that would be vaccine resistant and that would lead governments and policymakers to yet again go back to containment and lockdown measures. It doesn't seem to be the case at the moment, but winter is coming. We know that these variants are particularly contagious in times of colder weather than what we have now in Frankfurt. Great. We'll certainly be talking about all of these threats. But let me turn to you, Governor Bailey. Thank you. I want to start with some of the successes of policy over the last 18 months. And I think there are three things I want to draw out. One is that we are seeing, we've seen a very substantial attenuation of the economic effects of COVID. Secondly, and consistent with that, the impact of the COVID shock on household incomes, on employment, and on the viability and health of businesses has been a lot less than I think we feared it would be going back to the spring last year. And thirdly, policy in the broader sense, because there are clear monetary and fiscal policy, has played a very important part in achieving that. So relative to where we were when we spoke a year ago, we are, I think, we have substantial success to look at. Now, the recovery is uneven. That's not surprising because we've had both a shock to demand and a shock to supply, both are recovering. We tend to call it, two big moving parts. To give an example, I agree with Christine about service sector recovery, but we've still got to, certainly in the UK, we've still got to see some shift from goods to services. And maybe that would happen. But again, that is affecting some of the relative balance of demand and supply. As Christine said, we are seeing bottlenecks on the supply side. Some of those are global in nature. Some commodities, microchips, some of them are specific. Believe it or not, we've been rather short of wind in Britain in recent months, over recent week or two, to generate power. I find that quite hard to believe, but it's true. Now, I expect all these things to be temporary. I haven't changed any, nothing I've seen has caused me to change my view on that. That continues to be my view. So I think we face two issues now with that diagnosis of the supply shocks being temporary. One is how the labour market is going to evolve, and particularly the supply of labour. And secondly, as we go through this hump of inflation caused by this relative balance of supply and demand and the effect of some of these bottlenecks and supply shocks, how it might affect inflation expectations, because of course it is important that we keep those anchored in the medium term to the policy framework that we have. So we are seeing some weakening of the pace of recovery, but I agree with Christine's assessment that I think, while we're not completely out of the water, I expect us to be back to pre-pandemic level, certainly in the early part of next year, possibly, a month or two later than we thought we would be over the summer, but we're still heading back there. So we need to guide through that in terms of what I said, particularly the labour market supply and keeping a very close watch on inflation expectations. Thank you. Great, thank you. And again, issues that we will be discussing further over the next 45 minutes. Chair Powell, can I turn to you then? Thank you. It's great to be here. So I guess I'll start by noting that the outlook, while I think
quite positive in the medium term is highly uncertain. And one of the main reasons for that is just that this expansion is quite unusual and actually very different from the normal pattern. So what we have now is very strong demand, quite strong demand on the back of strong fiscal policy, strong monetary policy. In the United States, fiscal policy more than fully replaced lost incomes. So typically at this phase of an expansion, we'd be supporting aggregate demand with our monetary policy to try to get back to a full level of economic activity, and that's not the situation now. Demand is strong. It's supply side constraints that are really holding back the economy at this time. So quite unusual. And as I guess Christine mentioned, the demand is really in the goods sector rather than the services sector. So usually the services sector would be okay in a downturn and goods would be sharply cyclical. We have the opposite here. So the playbook for what to do and how to think about this is quite unusual. Turning to the United States for just briefly, very strong demand with the support I mentioned. Household and business balance sheets quite strong. Demand in the first half and results really strong. A lot of people getting back to work. Over the last couple of months, the Delta variant has held up progress, keeping people from resuming public activities in the travel and leisure sector. Job growth slowed sharply, and estimates of third quarter GDP have come down, albeit still to strong levels. Bottlenecks and tangled supply lines are holding back activity in some goods, particularly automotive. And the combination of strong demand for goods and the bottlenecks has meant that inflation is running well above target. And we expect that it will continue to do so in coming months before moderating as bottlenecks ease. So the outlook, as I mentioned, is for strong demand to return as Delta cases continue to decline, bringing faster progress toward full employment. It is frustrating to acknowledge that getting people vaccinated and getting Delta under control 18 months later still remains the most important economic policy that we have. And it's also frustrating to see the bottlenecks and supply chain problems not getting better. In fact, at the margin, apparently getting a little bit worse. And that's what we see that continuing into next year probably and holding inflation up longer than we had thought. But ultimately, the outlook for next year among my colleagues and me at the Fed for next year is quite a strong year with growth well above trend and unemployment reaching significantly lower levels than now. Thank you. Thank you. So it is quite interesting that uncertainty is still a part of the lexicon here a year later. But let's delve into inflation. You have all raised it. Sticky issue. We've seen a rise in inflation as economies have rebounded. As you have said, energy prices have spiked. Supply chains are being disrupted. Shipping costs are soaring. All of you, or rather the Federal Reserve, the BOE, and the ECB, have all characterized this as transitory. But history would suggest that temporary inflation, if it goes on long enough, becomes permanent. And we have spoken, we at Reuters have spoken to policymakers who privately express more anxiety about the stickiness of this inflation and, of course, the effect it could ultimately have in dampening growth and therefore hurting the livelihoods of people whose lives have already been upended about the pandemic. So let's talk about that a little bit. Chair Powell, your own forecast suggests that inflation is stickier than the word transitory would suggest. Should central banks start acknowledging that we have basically let the inflation
inflation genie out of the bottle? Well, let me explain what we mean by the word transitory. So for some time, we and others have been forecasting that inflation, the current inflation spike, will not lead to a new inflation regime in which inflation remains high year after year. In other words, that is what we mean by saying that the spike will be transitory. We don't mean that prices will come down. What we mean is that this inflationary spike will not lead to a new regime of ongoing higher inflation. As I mentioned, economic forecasters and pricing in financial markets are well aligned with that perspective. And why is it our perspective? It's really because the current inflation, as I mentioned in the beginning, the current inflation spike is really a consequence of supply constraints meeting very strong demand. And that is all associated with the reopening of the economy, which is a process that will have a beginning, a middle, and an end. And we see those things resolving. It's very difficult to say how big the effects will be in the meantime or how long they will last. But we do expect that we'll get through that. Now, Alessandra, I think you identified exactly the right risk is if this period of higher inflation, even though it ultimately is very likely to prove temporary, if it lasts long enough, will it start changing the way people think about inflation? And we monitor that very, very carefully through a number of different lenses because we think that is quite important. And we do not see evidence of that now, but that's quite important. And so, of course, if we were to see sustained higher inflation and that were to become a serious concern, I will tell you the FOMC would certainly respond and we would use our tools to assure that inflation runs at levels that are consistent with our goal. Thank you. President Lagarde, in your speech yesterday, you seemed to give more emphasis than you had given before to the upside risks of inflation. I was wondering whether you could flesh this out a little bit for us. Well, I tend to agree with my colleague Jay Powell in considering that the price increase that we are seeing at the moment is largely attributable to the reopening of the economy. So whether you look at energy prices, whether you look at some VAT aspects in the euro area, particularly in Germany, whether you look at some prices having to do with sales, all of that is base effects, and it's, the economy reopens, it went down during the lockdown period, it's going up, but on average, we are pretty much back to where we were in 2019. Now, just like what Jay was saying, we monitor very carefully the possible impact that lasting transitory price increases could eventually have. And in particular, we are very attentive to inflation expectations and making sure that they remain well anchored. Well, when we look at that using a variety of instruments to measure those expectations, we see that they went up by about 50 basis points, but they're still at a distance from our 2% target. The second aspect that we look very attentively at is the wage increases and the wage negotiations that are going to reopen in the euro area. At the moment, we are certainly not seeing any widespread contamination, so to speak, of those price increases into wages that would produce the second round effect that we would be very attentive to. So we monitor carefully, but we certainly have no reason to believe that this price increases that we're seeing now will not be largely transitory going forward. So if I can just follow up, does that explain then why, to a certain extent, your assessment and that of your colleagues here is similar, but the conclusions with regards to the Eurozone as to upcoming policy changes is different? Because, of course, Governor Bailey and Chair Powell have made, clear indications about possible rate hikes down the line.
Well, we started in the euro area from a different base. We are at different interest rates. Ours are certainly for the DFR negative, and we have asset purchases that are underway and will continue to be so until we are confident that we reach the level that we have set for ourselves. So we start from a different base. Our inflation levels at the moment are different as well. But we have a very clear roadmap. And that is our forward guidance, which we have revamped and communicated upon back in July, which is our roadmap going forward in order to reach our target, which is that symmetric 2% that we defined for ourselves. That forward guidance is very clear. We need to be at target well before the end of our horizon. It has to be lasting until the end of our horizon. And third, we have to be content and satisfied, Governing Council of the ECB, that there is sufficient progress in the underlying inflation so that it will be sustainable in the long run. So that's probably the reason why we are at a different pace in our monetary reaction function. Governor Bailey, what is happening in the UK? We are in a global panel here. I, of course, live in London, but, you know, what is happening? You see queues at the petrol stations, you know, lorry shortages, supermarket shelves empty. What is happening, and what effect will it have on the UK economic recovery? Well, I mean, it's a form of the supply side shocks that we've all been talking about. You know, we have had a number of, frankly, shortages and supply side shocks, which don't have a common cause, I would say. And I think it's important to emphasise that. Some of them are global, some of them are domestic. I think they have different origins. I mean, it's interesting. You mentioned the petrol station queues, which I do think now there's some evidence. You know, they are now. I think we may be past the peak of that, actually, because we're not actually short of fuel. It was the capacity and the drivers to deliver it, actually, that caused this. And I think there's evidence that is now correcting itself. Now, you mentioned this point about where's the boundary, if you like, between transitory and sticky. No, I think that depends on the nature of the shock. I don't think we should think that transitory has a fixed time point in it for all shocks. I mean, the shape and the dynamics of these shocks will be somewhat different. But if I could say, I mean, picking up on what Christine and Jay have said, I think for me there are two things that really stand out here in terms of judging these effects. One is, as I said, how it's appearing in the labour market. We've got a very obviously important development tomorrow night, actually, in the UK, because the so-called furlough scheme comes to an end at midnight tomorrow night. And that will have an important, I think, role in shaping how the labour market and how labour supply relative to demand evolves. And the other one is the evolution of expectations. And I mean, that is where I think we have to be very focused in terms of policy. But I would emphasise a point I've made a number of times. Monetary policy can't solve supply side shocks. Monetary policy can't produce computer chips, it can't produce wind, can't produce truck drivers. That's not something we can do. What we have to do is focus on the potential second round effects from those shortages. Can I just, you mentioned the furlough program, and as you said, there's still time to understand, right, what happens after the end, the impact of the end of the furlough program. But have I understood correctly your recent comments? In which you're saying that there's no reason the BOE
cannot start to raise rates before it has finished quantitative easing at the end of this year. Are you trying to message that you're considering raising rates maybe at the November or December meeting? Well, I'm not going to prejudge. Our next meeting is the beginning of November, and obviously, as you'll understand, I'm not going to prejudge what we will decide at that meeting. That's not for now. I think what we're very clearly saying is, as I'm sure you know, our quantitative easing program is somewhat different from some other quantitative easing programs, because it has a fixed length of time and a fixed amount, and that length of time is actually almost up when it finishes in the middle of December. So it is now in its final stages. Talk of tapering is rather different in our case because it naturally tapers off. And the point that I and others have made is that when we consider policy in the round, as we do, and particularly with the asset purchase scheme now coming towards its end, we do look at all the tools at our disposal. And we have said a number of times, and I think this is an important point to make, that when we come to decide to change policy, the preferred tool will always be rates, because we understand the effect. The effect of rates in the monetary transmission mechanism is much better understood. They are the primary tool, I think, of central banks. Certainly I can say that for the Bank of England. But that's not to prejudge what we will decide in November. And just the last thing, because, again, it's a global audience here. How much of these problems, of these supply problems, are COVID? How much are they Brexit? And don't answer Brovid. The answer I'm looking for is not Brovid. Well, actually, the interesting thing is they're not just those two, actually. We can't, I think, we certainly can't attribute the lack of wind power to either of those two. I don't think the semiconductor chip issue, it may have some connections to COVID, but I think it's got other causes. So when you look at each of these shocks, you'll find different things at work. Now, as I think Christine was saying, I think, and Jay, COVID, I think certainly has had quite an influence on, or has been the big influence on the shipping issue, for instance, because it's caused this, this imbalance of supply and demand. It's disrupted shipping flow, as it were, over time. So I think that one can put down, a lot of that to shipping, because to COVID, and also because, by the way, it's a global market. It's not just a European market. Okay, all right, thank you. Governor Kuroda, Japan, of course, is in a different situation, which you talked about. Consumer inflation stuck at zero, raw materials costs are rising. So I did want to pick up the supply disruption issue with you. Factory shutdowns caused by the pandemic are triggering shortages that are affecting global manufacturers, including Japan's. Could Asian nations lose their role as the global parts production hub? And what would that mean? Yeah, maybe before going to that issue, let me explain a little bit about the price situation in Japan. As you said, currently core CPI inflation is around zero. But it has been pushed down by more than 1 percentage point by mobile phone charge reduction alone. So excluding temporary factors like this one, the underlying inflation is not so weak as the headline figure. But two facts. One, certainly the Japanese economic recovery is somewhat lagged behind US or European economic recovery. But more importantly, during the pandemic recession, the Japanese firms retained employment. Actually, the unemployment rate before the pandemic was around 2.5%. And the worst unemployment rate was 3.1% last October. And currently, unemployment rate is 2.8%. So
despite huge decline of economic recoveries, economic activities, and now recovery, the employment was retained by Japanese firms. And so even if the economic recovery starts and in coming months it would become stronger, but inflation acceleration is unlikely. So there's no kind of speed limit in that sense. Now, supply disruption in Asia, there are two factors. One, semiconductor supply shortage, but that is more or less, if not solved, but become less important as far as the Japanese economy is concerned. But then, in recent months, as you may know, some Southeast Asian countries have suffered from huge increase of COVID-19 infection, and some countries imposed severe lockdown, even closing various factories, so that the procurement of various parts, particularly of automobile parts, became quite difficult for Japanese automakers. So certainly this kind of supply disruption has been affecting the Japanese economic recovery somewhat. But I think these are anyway transitory, temporary. And I would say that within the next couple of months, or this kind of supply chain disruption would be somewhat reduced. But on the other hand, we can see, as I said at the outset, the demand for IT-related goods and automobile-related goods, demand are increasing globally very rapidly, so that this is what should I say? Demand is recovering and increasing so rapidly that supply chain cannot fully follow the increased, rapidly increasing demand. So this is not the usual sort of supply chain disruption, disruption caused by earthquake or flood or fire and so on and so forth. Mm-hmm. So this kind of another supply chain, I don't say disruption, but somewhat lagged response of supply to rapidly increasing demand. And this is likely to be prolonged somewhat. Mm. Governor Kuroda, I want to come back actually to the disruptions that you just mentioned, climatic disruptions, but I wanted to turn to financial stability. Of course, you are all paid to worry about financial stability, and we learned a decade ago that what starts in financial markets doesn't stay in financial markets. And a live risk right now is the Chinese regulatory crackdown and the broader downturn in China's real estate market. So, Governor Kuroda, if I could start with you, some suggest that China's growth has been driven by this red-hot property market, and that what is happening now is actually similar to what happened to Japan in the late 1980s. And of course, we all know what happened when that bubble burst. So, is China's bubble about to pop? And if so, what happens next? Mm-hmm. I think the China's real estate program
is somewhat different from the problem we faced, as you said, toward the end of 1980s or early 1990s, or the subprime loan problems faced by the US in 2008. Because one, there appears to be, what I say, extremely speculative investment in real estate market does not appear to be the case in the Chinese case. Of course, Chinese real estate market has been expanding quite long time, and currently the Chinese authorities are taking various measures to what I say, contain the excessive speculative investment or excessive expansion of real estate activities. But I think at this stage there's it's quite unlikely this problem would sort of proliferate and affect the entire Chinese real estate market or even the entire Chinese economy. I don't think it's likely. And then, of course, international what you say impact of course is another thing. But as far as I can see, probably this is also the case in the US and Europe. As far as the Japanese financial system is concerned, the direct exposure to a particular real estate group or even the entire Chinese real estate market is quite limited. So you've said I don't think it's quite. Yeah, you have set I our don't mind. think it's likely to be a big financial crisis emanating from China to the world. That's unlikely, I think. Got it. Well, now that you've set our mind at ease about that, then let me do a quick lightning round on what are the biggest risks to financial stability then. President Lagarde. and then we'll go Chair Powell and Governor Bailey. Well, in addition to all the sort of traditional financial stability risk that we can think about, I would like to mention one which is high on my mind and maybe far on the horizon, but which could have financial stability bearing, and that is if we are to completely ignore the consequences of climate change on the work that we do, on the assets that are held, and on the transition that we plan going forward. I think that's a risk to financial stability. Now, in addition to that, you have cyber risks, you have, repricing of assets in brutal conditions. You have all the traditional ones, but the one that is associated with climate change is one that is important, and as previous panel demonstrated, really needs to be further explored and prepared for. Chair Powell, I would like an answer to the main question, but actually what President Lagarde said is very interesting, because in the past two panels ago, I don't know if you all were listening, but one of the participants indicated that one of the reasons that central banks have made errors in forecasting inflation is because they are not taking into account climate change enough, and that basically targeting should be no longer based around inflation, but other indicators for this reason. So, Chair Powell, what
if you could address that, and then quickly, and then your risks for the financial stability. Tell you what, I'll do it in the reverse order. I had three quickly that I wrote down. One is a successful cyber attack on a large financial institution or financial market utility. The second is just the structural problems that we saw in markets during the height of the acute phase of the pandemic. This is short-term funding markets, the treasury market. We're working on fixing those, but those were revealed, and I think we need to fix them. And then longer term, I would agree that both physical and transition risk from climate change for financial institutions. So turning to your question on inflation, I mean, I think the blue chip forecast for 2021 inflation in the first quarter of this year for the full year was about 2%. So what people didn't see coming was the supply side constraints. And no one forecast that, and there are very few people, if they did, forecast that. So that was a surprise. It's not that our inflation models are wrong, although they certainly are not perfect, but just the sort of scope and persistence of the supply side constraints were missed. I wouldn't say that climate change is a particularly important aspect of the inflation forecasting story for 2021, although that's quite an interesting hypothesis. Okay. And Governor Bailey, on the biggest risks to the financial system. Well, I'm afraid I don't have unique ones. Well, actually, probably good news I don't have unique ones, just to pile even more on. I would highlight two that I think Jay and Christine have already mentioned. So first, I would highlight cyber. I probably slightly disagree with Christina. Yes, it's been around for a while. I'm not sure I'd quite call it traditional in the sense that actually I think it's the risk that has gone up the, unfortunately, up the league table very rapidly, keeps evolving, and we have to take an approach to that we will never be rid of it in a sense. We have to keep acting on it for the reason that the threat just keeps, if you like, developing, emerging, and changing. And it has certainly, I'm afraid, sadly gone up the list yet again in the last year. The second one I would say, as Jay highlighted, is the stress that we saw in funding markets and in the non-bank financial world, particularly going back to spring, March of last year, where we saw not only a stress in that world, but also the capacity of that stress to have financial stability and broader systemic implications. We saw what we might call core markets, as Jay highlighted, being affected by that. And certainly when you look at the work that we're all closely involved in the Financial Stability Board, the Global Financial Stability Board, that is a very key point of focus in the work of the board, and rightly so. So I'd like to turn for a moment on the pandemic response, lessons learned. One of the notable successes, of course, of the pandemic response has been the perhaps unprecedented coordination between monetary and fiscal policy. And clearly this cooperation was justified in the middle of a financial crisis at the time, more recently because of a global virus, zero interest rates. But I thought we could talk a little bit perhaps about long-term risks of this. Chair Powell, the past 18 months have proved that, as we were saying, fiscal and monetary policy can pull us out of a recession. But the textbooks also say that when the economy is revived, that has to pull back. And yet, in Congress right now, much of the conversation is about more spending, not about the deficit. So I guess, and you yourself have indicated that interest rates are going to remain very low for a lot longer. So I guess my question is, are you overdoing it?
Well, I don't think so. So a couple of points. First, in the United States, GDP has now surpassed its prior peak, and it's on its way to exceed its prior trend, which is a remarkable success for policy. By any reckoning, this was a historically successful response from both fiscal and monetary policy. It's also worth noting that there's good reason to think that fiscal policy is particularly effective when monetary policy is pinned at the effective lower bound. Not only does the effective lower bound for interest rates not bind fiscal policy is actually more effective at the ELB because longer term rates will go up less as the economy strengthens. I would characterize them as complementary rather than coordinated. Monetary policy works by stimulating aggregate demand with a lag, but the pandemic threw 25 million people in the United States out of work overnight. What was needed was massive and immediate replacement of lost incomes for households and small businesses, and that's what fiscal policy did. So we really worked in parallel rather than in collaboration. The place where there was collaboration was with the various lending facilities, and this also happened in other jurisdictions, which are only available to us in a declared emergency involving unusual and exigent circumstances. That really worked as well. We worked very closely with Treasury. We're unwinding all of that, and we're going back to separate roles. And I think it's important to go back to observing those institutional lines. In terms of overdoing it, I think the historical record is thick with examples of underdoing it. And pretty much in every cycle, we just tend to underestimate the damage and underestimate the need for a response. I think we've avoided that this time. And in particular, fiscal policy was so fast and so forceful here. And we tried to do the same here. I think, as you know, we are at a place where we're getting close to achieving substantial further progress since last December toward our goals, which would enable us to then taper our asset purchases. Raising interest rates for us is a ways off because we have a substantially higher test. But about half of the FOMC believes that test will be met by the end of next year. And